رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine and doing well. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आज की अच्छी बात से। सबसे पहले आप लोगों के साथ कुरान पाक की एक आयत शेयर करना चाहूँगी जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। जब भी हम पे कोई भी मुश्किल आती है हमें उसे घबराना नहीं चाहिए। हमेशा मुश्किल के बाद आसानी आती है और अल्लाह ताला कभी भी किसी भी इंसान पे उसकी हिम्मत से ज़्यादा उस पे कभी भी कोई मुश्किल जो है वो नहीं डालते। सो हमें सब्र के साथ जो है अपना हर लम्हा जो है वो गुजारना चाहिए, इस यकीन के साथ कि अगर कोई मुश्किल हमारे ऊपर आई है तो उसके बाद आसानी आने वाली है। आज के लिए जो हदीस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझे अपनी ज़ुबान और हया की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए वो हमारी ज़ुबान है। हमारी ज़ुबान की वजह से कभी किसी को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। जब भी हम बात करें सोच समझ के बात करनी चाहिए और हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए जिससे अगले को फ़ायदा पहुंच सके और अगले का नुकसान ना हो। और सेकंड चीज़ हमारी हया, हमें अपने पर्दे का, अपनी हया का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। तो उसके बाद फिर हमारी जन्नत की ज़मानत खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दे रहे हैं। Dear students, today is lecture number 5 of Unit 2, that is Vectors and Equilibrium, and in the today's lecture we will learn about the product of vectors, which means the multiplication of the vectors. Right till now we have just studied about the addition of the vectors, like how we can add the vectors, and we have discussed the two methods, the geometrical method and the analytical method. And in the today's lecture we will see how to multiply the vectors. If we want to multiply the vectors, then what are the processes? The second thing which we will learn in the today's lecture will be about the concurrent forces. So starting with the product of the vectors, actually there are the two ways to multiply a vector by a vector, and it depends on the physical nature of the given vectors. जो हमारे पास वेक्टर्स होंगे उनकी फिजिकल नेचर पे डिपेंड करेगा कि जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए। So there are basically the two ways of multiplying a vector. So as a result, the vector multiplication could be the scalar product or it could be the vector product, and we will discuss them in detail. What does the scalar product and the vector product mean? So if we multiply a vector by a vector and as a result we get a scalar quantity, then such type of vector multiplication is known as the scalar product. अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसके रिजल्ट में हमें स्केलर क्वांटिटी अगर मिले तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट का नेम जो है वो देते हैं, क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। So the two vectors when multiplied we get a scalar product, the scalar quantity, then such type of vector multiplication is known as the scalar product because we are getting the scalar quantity. And this is also known as the dot product, and we use the dot to show the multiplication of the two vectors in case of the scalar product. And if we multiply
the two vectors such as the vector A and vector B, and such that their result is equal to the scalar quantity that is C. So the dot product of the two vectors will be equal to the scalar quantity, and this could be any number, any quantity that is equal to C. So as a result, if we want to write down this equation in general form, then the dot product of the two vectors is equal to A, B cos of theta. Magnitude of the vector A multiplied by the magnitude of the vector B and the multiplication of the angle between the two vectors with the cos component. So as a result, this angle theta is the smaller angle between the two vectors. So this is the scalar product of the two vectors, in which when we multiply the two vectors, we obtain a resultant as a scalar quantity. So now we will see how this is. For this scalar product, we multiply the two vectors such that first of all we will draw the diagram. First of all, we will draw the coordinate axis, the x-axis and the y-axis. And then we will consider the two vectors such that the vector A and the vector B, and the angle between these vectors is theta. So the vector A, the vector B, and the angle between these two vectors A and B is theta. So स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पे मीनिंग क्या है? यहाँ पे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं? एक्चुअली द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स A dot B is equal to the magnitude of vector A multiplied by the component of vector B that is parallel to vector A. डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया सच दैट कि एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि फर्स्ट वेक्टर के पैरेलल होता है. अगर हम A डॉट B कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें हम लोग फर्स्ट वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड लेते हैं इटसेल्फ. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A वो एज इट इज हमारे पास आ जाएगा. सेकेंड वेक्टर का हमने क्या करना है? उसका हमने कंपोनेंट कंसिडर करना है which is parallel to the vector A. So what does this mean? इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे इस वेक्टर B को जो है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व करना है. So इसका जो x और y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स बनेंगे, A के जो पैरेलल यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा that will be the cos कंपोनेंट. ये हमारे पास bx होगा और ये ऑपोजिट साइड वाला जो है एंगल के जो सामने साइड इसकी बनेगी, ऑपोजिट साइड पे जो एंगल के सामने जो साइड होगी दैट विल बी इक्वल्स टू द by. सो एज अ रिजल्ट x कंपोनेंट bx जो होता है, अगर हम इसके ऊपर cos रेशियो अप्लाई करें, सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज and the base is equal to bx while the hypotenuse side is equal to b. So from this equation, bx is equal to b cos of theta. So the component of b, vector b, that is parallel to the vector A is its bx component. So यहाँ पे हम कौन से component को लिखेंगे? यहाँ पे हम b cos of थीटा को यूज करेंगे. सो दैट इज व्हाई वी डू नॉट यूज द साइन थीटा इंस्टेड ऑफ द कॉस
theta. So as a result, this equation will be equal to AB cos of theta. So when we multiply the two vectors such that we multiply them by the scalar product, so in the scalar product, we consider the magnitude of the first vector and we multiply it to the component of the second vector that is parallel to the first. So as a result, we get AB cos of theta. And since it is a scalar quantity, so we do not need any kind of unit vector to show the direction of this quantity. क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती, तो यहाँ पे हम किसी भी किस्म के यूनिट वेक्टर को जो है वो यूज नहीं करेंगे. Now we will see either the scalar product is commutative or not. So let us see either the scalar product is commutative or not. Commutative means कि हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्या वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि हम a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या b को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So now let us see either it depends on it or not. So we have written a dot b as a into b cos of theta or a b cos of theta. So this is our equation number 1. Now we will see if we multiply b with a, so what will be the difference? So let us again draw the diagram so that you can be able to understand it better. Okay, so now we have the two vectors, vector b, vector a, and the angle between these two vectors is theta and x and y axis. So now in this case, we have to check either b dot a is equal to a dot b or not. So in case of b dot a, we will write down the magnitude of the vector b. Now in this case, b is the first vector, so magnitude of the vector b, and then we have to multiply it with the component of the vector a that is parallel to the vector b. So अब यहाँ पे हमने वेक्टर a को उसके कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व करना है. So as a result, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा that will be equals to ay और b के जो इसके साथ जो हमारे पास इसका x कंपोनेंट बनेगा that will be equal to ax. So now in this case, this will be equal to a cos of theta. And as a result, b dot a will be equal to ba cos of theta. And since it is a scalar quantity, it does not depend on the direction. So multiplication of ab is equal to ba. So we can write down b dot a as ab cos of theta. And equation 1 and equation 2 are equal. So we can say that the scalar product is commutative. Either you multiply a dot b or b dot a, you get the same result. So in this case, either you multiply a dot b or b dot a, you will get the same answer. a के वेक्टर को हमने यहाँ से इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है. ये वाला एंगल जो है वो 90 का बनना चाहिए. So this angle is actually of the 90 degree. और इसके रिजल्ट से हमारे पास जब आप इस एंगल के अकॉर्डिंग इनको रिजॉल्व करोगे इनके कंपोनेंट्स में, सो इसके एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो x कंपोनेंट बनेगा और इसके एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है वो वर्टिकल y कंपोनेंट बनता है. So that is why AX is parallel to the B. Now moving towards the vector product,
when we multiply a vector with a vector and as a result we obtain a vector quantity, then such kind of multiplication is known as the vector product. It means अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में भी हमें वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशंस होती हैं इनको हम वेक्टर प्रोडक्ट का नेम देते हैं, बिकॉज after multiplication we get a vector quantities. So it means after multiplication we get a magnitude and also a direction in this case. So for example, if we consider the two vectors and we multiply them, A cross B, in this case we use the cross instead of dot. So this is also known as a cross product. So if we multiply the two vectors A cross B, then their result is also a vector, and that is the vector C. And in general form, we can write down this equation as A cross B. Sorry, this is not dot, this is cross. A cross B is equal to the magnitude of the vector A into the magnitude of the vector B into sine theta. Now we will not use the cos component. In this case, we will use a sine component. And later on, you will get why we are using this sine instead of cos into the unit vector n. Since this is a vector quantity, so for the vector, we have to use the unit vector to show the direction. And this unit vector n shows that the direction is normal to the plane in which these two vectors are present. So the theta is again the smaller of the angle between the two vectors, while n is used to represent the unit vector, which is used to represent the direction. And this direction could be found out by using the right hand rule. So now what is the right hand rule? The right hand rule that is used for the vector product is rotate your finger of the right hand from the first vector, that is the vector A, to the second vector, that is the vector B. Then the stretched thumb will point in the direction of the resultant vector. So in this case, if you multiply A cross B, then this thumb will indicate the direction of the resultant vector C. And in case of B cross A, you will have to rotate the fingers from the vector B towards the vector A. And in this case, the direction of the thumb will again indicate the direction of the resultant. But now in this case, the direction is opposite as compared to the previous case. So since the vector product is a result in which we get a vector quantity, so the vectors depends on the magnitude and also they depends on the direction. So this product will depend on the type of the multiplication. Either you are multiplying A cross B or B cross A. So for both the cases, the magnitude will remain the same, but the directions will not be similar. Now, dear students, let us consider the two vectors such that we are multiplying the vector A by vector B. So first of all, we will consider the vector A and then the vector B. And we want to multiply them as A cross B, and the angle between these two vectors is theta. So A cross B will be equal to the magnitude of the vector A multiplied by the component of vector B that is perpendicular to vector A, not parallel but perpendicular to vector
A and into the unit vector that is used to represent the direction. So from this, A cross B will be equal to the magnitude of the vector A, that is simply equal to A. And now we have to find out the component of the vector B that is perpendicular to vector A. So let us resolve these vectors into the components. So we will resolve the vector B. We will draw the perpendicular, which makes a 90 degree. So this component will be equals to by and this will be equals to bx. Now, instead of considering the component of B that is parallel to vector A, we have to consider the component of vector B that is perpendicular to vector A. So by is the component of this vector that is perpendicular to the vector A. So as a result, we get B sine of theta into the unit vector. Or simply, we can write down this product as AB sine of theta into the unit vector. And the magnitude of AB sine theta gives the area of the plane that is determined by the two vectors A and B. And the unit vector gives the direction of the area of the plane. It gives us the direction of the vector area. Now, how does AB sine theta give rise to the magnitude of the area of the plane? For this case, if you consider the sides A and the opposite side, that is B sine theta, so this will be actually equal to the area of the parallelogram. So if you multiply these vectors A, B, so as a result, you will get the area of the plane. So अगर हम vectors का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो उसके रिजल्ट में ये एक पैरेललोग्राम बनता है और पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन ए बी साइन ऑफ थीटा. So as a result, the cross product magnitude will give rise to the area of the plane, and the unit vector will tell us the direction of that plane. And the vector product is anti-commutative. It is not commutative because the result is a vector quantity. So the vector product is anti-commutative, and we will see how it is anti-commutative. First of all, we have discussed A cross B, and A cross B is equals to AB sine of theta into the unit direction, that is n. And now we will find out what will be the result of B cross A. If we multiply the two vectors, and such that in this case we will multiply vector B by vector A. So now we will see what will be the result of this question. So now we will multiply B cross A. So in this case, since B is the first vector, so we will write down the magnitude of the vector B. And for the second vector, we have to find out its component that is perpendicular to the vector B. So the vector that is perpendicular to the vector B, that is going to make the angle of 90 degree, will be this is the 90 degree angle. So the vector
component, that is A sine theta, is perpendicular to the vector B, because this is opposite side to the angle theta. So as a result, this will be equals to A sine of theta, and in this case its direction is opposite. So as a result, B cross A is equals to minus AB sine of theta into the unit vector n, and since AB is equal to the negative sign, so that's why this vector product is anti-commutative, because as a result of the vector multiplication, if you switch the position, the direction of the unit vector reverses, it changes. So the vector product is anti-commutative instead of the commutative property. Example 2.4 is vector A having magnitude of 3.2 makes 50 degree with x-axis, and vector B with magnitude 5.2 makes 110 degree with x-axis. What is the magnitude of their dot and cross products? दो वेक्टर्स गिवन हैं जिनके मैग्नीट्यूड और उनके डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हमें गिवन है, और हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है उनके डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट्स का। तो सबसे पहले तो हम इन वेक्टर्स को जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं एक एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस हमारे पास और वाई एक्सिस, और हमारे पास फर्स्ट वेक्टर जो है दैट इज वेक्टर ए whose magnitude is 3.2 and the angle is 50 degree. So यहाँ पे हम approximate length के साथ जो है वो इस एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं. This is vector A. Its angle is 50 degree from the x-axis and its magnitude is 3.2. And the second vector is the vector B, and its magnitude is greater than the vector A, and its angle is also greater than the angle of the vector A, and it equals to the magnitude of 5.2, and its angle from the x-axis is 110 degree. Now the very first step is to find out the angle between the two vectors, this angle theta. So this angle theta will be equals to theta 2 minus theta 1. So this will be equals to 110 degree minus 50 degree, and the angle between the two vectors will be equal to 60 degree. And this angle we have to use in the dot and the cross products. So first of all, we will find out the dot product A dot B, and A dot B is equals to AB cos of theta. Substituting the values 3.2 multiplied by 5.2 into the cos of 60 degree, and if you calculate the answer, you will get 8.2. So this is the answer of the dot product. And for the cross product, we will multiply A cross B, and since we need only the magnitude, so we will use the mod equals to AB sin theta. अब यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें जस्ट जो है उसकी मैग्नीट्यूड रिक्वायर है. So by substituting the values 3.2 multiplied by 5.2 into sine of 60. So this will be equal to 14.1. So this is the answer of the cross product. So A cross B, the magnitude of A cross B is equal to 14.1. So this is how we will solve such
type of questions. Now, the second topic of the today's lecture is the concurrent forces. This is quite simpler topic. The forces are said to be concurrent when two or more forces that are acting upon a body and the lines of action of these forces passes through a common point. अगर एक या एक से ज़्यादा फोर्सेस किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हों और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी भी कॉमन पॉइंट से पास कर रही हो तो हम उन फोर्सेस को जो है वो कॉन्करेंट फोर्सेस का नेम देते हैं। जैसे कि आप लोग इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक नट के ऊपर 3 फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं और इन 3 फोर्सेस को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो इन तीनों की जो लाइंस हैं वो एक कॉमन पॉइंट में से पास करेंगी। तो ऐसी फोर्सेस जो कि किसी भी कॉमन पॉइंट में से पास कर रही हों वो फोर्सेस आपस में जो है वो कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाती हैं। तो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो कि किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हो और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट में से पास हो रहा हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम कॉन्करेंट फोर्सेस का नेम जो है वो देते हैं। और इसी तरह से सेकेंड टर्म हमारे पास है इक्विलिब्रेंट फोर्स। और इक्विलिब्रेंट फोर्स हम किसको बोलते हैं? इफ टू और मोर फोर्सेस that are acting on a body, they could be balanced by a single force which is a resultant force. So the opposite to the resultant force is actually known as the equilibrant force. अगर आपके पास हमने यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, एक F1 और एक F2, और इन 2 फोर्सेस का हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लें, तो अगर ये हमारे पास इन 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट है तो इस रिजल्टेंट को जो बैलेंस करेगी फोर्स, वो फोर्स बेसिकली हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रेंट फोर्स कहलाती है। सो the 2 or more concurrent forces can be balanced by a single force, and that single force is known as the equilibrant force. Dear students, your homework for today is the assignment 2.4 from the book. Kindly note it down so that you can solve it later. And this is the end of today's lecture. Thank you so much. I hope all of you have enjoyed today's lecture. For any kind of queries, you can write your question in the comment section. See you in the next video with a new topic. Till then, take care and Allah Hafiz.